We will be discussing about conversion of units, which is another important application जहाँ पे हम लोग dimensions का use कर सकते हैं. So just let us have a quick recap of the concepts, right? Already in our board level class we have discussed this. फिर से एक बार quick revision कर लेते हैं कि remember that whenever you measure any physical quantity, so we can write that Q will be equal to N multiplied by U. Okay, so for example, if I write that length of a line segment is 10 centimeter, so basically it means that जो line का length है, line segment का length, it is 10 times of you can say standard length called centimeter. तो ये जो 10 times हमने लिखा, 10 is called n, which is known as numerical magnitude, and the standard that we take centimeter, that is known as the unit. So whenever we measure any physical quantity, right, whenever we write the measured value of any physical quantity, our Q should be equal to N multiplied by U. And remember that for a given quantity, for a given quantity, N and U are inversely proportional. For example, अगर मैं 10 centimeter को millimeter में लिखूंगा तो it will become 100 millimeter. So when the size of the unit will be smaller, उसका जो N होगा it will become greater, right? By the same factor. So N and U are inversely proportional. So automatically N1 is the numerical magnitude. If N1 is the numerical magnitude of a physical quantity, corresponding to unit U1, right? Corresponding to U1, and if N2 is the numerical magnitude of the physical quantity corresponding to unit U2, automatically we can say N1 multiplied by U1 should be equal to N2 multiplied by U2. In other words, we can say that N2, जो नया system में जो value होगा, that will be N1 U1 divided by U2. So this is the basic working formula for conversion of units. This is the basic working formula for conversion of units. And remember कि जब भी हम लोग किसी unit को express करेंगे, we have to express in terms of the fundamental units, right? U1 and U2 they must be expressed in terms of fundamental units. And अगर हम किसी भी quantity के unit को fundamental unit के terms में लिखते हैं, you know that is nothing but the dimensional formula, right? The kind of representation that we get, that is nothing but dimensional formula. Okay, so let us take some question based on this, right? Let us come to a question based on this, which has been already asked in the previous years. So कैसे हम लोग इसको solve करेंगे? For example, the question that we have, that writing the question here, question is that the density of a material in cgs system of units, cgs system of units is it is measured as 4 gram per centimeter cube. 4 gram per centimeter cube. The question है कि in a system of units, in a system of units in which unit of length is 10 centimeter, in which unit of length 10 centimeter,
and unit of mass is 100 gram, and unit of mass is 100 gram. The value of density will be the value of density of this material. Options are, option number one is 400, option number two is 0.04, option number three is 0.4, and option number four is 40. So this is a question from our PMD type cbse PMD. How to solve it? How to solve it? तो जैसे मैंने बताया था कि जो वर्किंग रूल है, बेसिक वर्किंग रूल ऑफ कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स क्या है कि n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2. तो जब भी हमको क्वेश्चन मिलेगा, द फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट कि व्हिच वन इज n1, व्हिच वन इज u1, व्हिच वन इज u2 एंड हाउ वी विल कैलकुलेट n2. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो द डेंसिटी इज गिवन इन सीजीएस सिस्टम एंड इट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यानी हमारा न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड n1 is 4 and the u1 unit is gram per centimeter cube, right? So gram to the power 1 and centimeter to the power -3. Okay. So since we are talking about density, it is always handy तो कि हम लोग अपना density का dimension याद रखें. हमें पता है कि density जो है, it is mass by volume, and dimensional formula for density is what? Mass to the power 1, length to the power -3. मतलब अगर मुझे डेंसिटी का यूनिट लिखना है तो मुझे मास के यूनिट पावर 1 लेना पड़ेगा और लेंथ का यूनिट -3 लेना पड़ेगा, which we can see here. Now n2 we have to find out, and u2 is what? To see in the new system हमारा unit of mass is 100 gram. So in place of mass का unit we will put 100 gram, and as per the dimensional formula power होना चाहिए 1. Secondly, length का unit is 10 centimeter. So now I need unit of density के लिए unit of length should be raised to the power -3. तो क्या करेंगे हम लोग? 10 सेंटीमीटर का पावर लेंगे -3, right? Automatically, what does it give us? It gives us 100 gram multiplied by 10 to the power -3 per centimeter cube. इसका मतलब कितना आ रहा है? 100 मतलब होता है 10 to the power 2. This is 10 to the power -3, so that will give us 10 to the power -1 gram per centimeter cube. And now you know the formula that n2 will be equal to n1 u1 divided by u2. Answer क्या आ जाएगा? n1 is 4, u1 was gram per centimeter cube divided by u2 हमें क्या मिला? 10 to the power -1 gram per centimeter cube. So now the units will be cancelled out. Gram per centimeter cube per centimeter cube. तो क्या बचा? 4 into 10 to the power ऊपर जाने से 1. So the answer will be 40. That is our option number 4. Is that clear? Yes, sir. Ritika, is that clear? Okay. So you can try out the next one. The next question you have to leave down, you can try it out. The question is, let's the units of and time are 1 centimeter mass, 1 kg,
10 centimeter and 1 minute. Okay. Value of value of 1 joule in this. Find it out. What will be the value of 1 joule in this system? What is joule? You know it is unit of SI unit of energy or what? To find it out, कितना होगा आंसर? Who asked for the steps? Just let me give a hint. N1 कितना है? What is the value of N1? Initial value it is given as 1. And what is our U1? Joule. But joule fundamental unit नहीं है. You have to express in terms of fundamental units. Joule क्या है? Energy or work. And we know that dimension of energy or work is what? Dimensional formula is M1 L to the power 2 to the power minus 2. Write down U1 in terms of that. Joule कैसे होता है? SI unit. SI unit means our mass will be in kg, length will be in meter, and will be in second. Now comes U2. In the new system, mass is in kg, so we will again write kg to the power 1. Length is in 10 centimeters. This will be 10 centimeter whole square. And time is in minute. That means 1 minute to the power minus 2. Okay. So now we can use the formula that N2 will be equal to N1 U1 divided by U2. N1 हमारा 1 है. U1 is kg meter square per second square. U2 is kg. ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 centimeter square, and this will be 1 minute to the power minus 2. First of all, you can cancel out kg. अब हमें क्या करना है? यूनिट्स को टेक आउट करना है. So for that you can make appropriate conversions. जैसे यहाँ पर मीटर था, in place of meter I can write 100 या 10 to the power 2 centimeter. फिर इसका स्क्वायर करते. Second we can leave as it is. नीचे 100 centimeter square is there. In place of minute you can write 60 seconds. Its total power will be minus 2. So this gives us 10 to the power 4 centimeter square per second square. Here we have 10 to the power 2 and 60 power minus 2 will come out. So if you do that, तो हम centimeter square per second square को directly cancel out भी कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? 10 to the power 4 by 10 to the power 2 will be 10 to the power 2. And अगर 60 का power minus 2 पर गया तो it will become 60 का power plus 2.
So I'll get 3600 into 10 to the power 2, or we can say 3.6 into 10 to the power 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so simply we can say in the new system, 1 joule will be 3.6 into 10 to the power 5 units, whatever units. Is that clear? Yes, sir. This is how we apply the, you can say, dimensions for appropriate conversion of units. तो इससे पहले दिन लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट टू मोर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन सो दैट कंप्लीट्स आवर डायमेंशन वाला पार्ट नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट ठीक है जहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट इसके बारे में बात करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट दोस एरर्स हाउ वी कैन represent the errors, how we can find out कि कितना error propagation होगा if we combine different physical quantities. And we'll also talk about significant figures, right? Rounding of numbers and all. Okay. सबसे पहले let us start with the part of significant figures. What are these? And let us recapitulate about the rules for counting them. Topic that we have about significant figures. तो significant figure मतलब क्या है कभी भी हम लोग कोई भी measurement करते हैं या उसका जब data हम लोग को मिलता है तो remember कि in a particular data in a particular number जो digits हम लोग लिख रहे हैं all of them may not be significant or may not be certainly known to us, right? तो कौन कौन सा digit ऐसा है जिसके बारे में हम लोग sure है और कौन कौन सा ऐसा है जिसके बारे में हम लोग sure नहीं है, that idea is given by significant figures. तो basically हम लोग क्या बोल सकते हैं कि all those digits in the number basically ये number क्या है एक measurement का data है ठीक है number which are certainly known purely known भी बोल सकते हो plus the first uncertain digit the first certain digit are collectively significant figures. किसी भी डेटा में अगर मेरे पास कोई नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे पता चलेगा उसके कुछ रूल्स है for counting them we have certain rules. Rule number 1 that all non-zero digits is significant. पहला रूल कोई भी नंबर में अगर नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे zeros between non-zero digits are also significant. अगर मेरे पास कोई जीरो है नंबर में बट वो जीरो के लेफ्ट और राइट में नॉन जीरो डिजिट्स आते हैं तो वो जीरो को भी हमें ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना पड़ेगा चाहे नंबर में डेसिमल हो या ना हो इसका हमें पड़ेगा. थर्ड रूल the trailing zeros मतलब ending zeros in a number without a decimal are not significant. अगर किसी नंबर में एंडिंग जीरो है पर डेसिमल नहीं है फॉर एग्जांपल 100 ठीक है कोई डेसिमल नहीं है तो वन नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होगा बट बाकी दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. Okay. On the other hand, the trailing zeros in a number with a decimal, the trailing zeros in a decimal
सिग्निफिकेंट, यानी अगर कोई नंबर में ट्रेलिंग जीरोस पॉइंट के बाद आते हैं तो दे विल बी टेकन एज सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट, फॉर अ नंबर लेस देन 1, लेस देन 1, यानी अगर कोई 0 पॉइंट समथिंग वाला नंबर है, the zeros to the right of the decimal, right? The zeros to the right of the decimal point, but to the left of the first non-zero digit. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई ऐसा नंबर लिखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट अ नंबर लेस देन 1, समथिंग लाइक 0.0025, तो इसमें ये जो दो जीरोस है जो डेसिमल के राइट में है बट नॉन जीरो डिजिट दैट इज 2 के लेफ्ट में, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. ठीक है. नेक्स्ट, वी हैव टू रिमेंबर दैट in a number written in scientific form, number written in scientific form. Scientific form कैसे लिखते हैं हम लोग? A into 10 to the power b, right? Where you know that A is the real part or characteristic part and 10 to the power b is called the decimal multiplier. So remember कि अगर कोई number scientific form में लिखा हुआ है, the number of significant figures, the number of significant figures equal to in the real part is A. जो रियल कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे पूरे नंबर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग काउंट करेंगे. वी विल नॉट सी डेसिमल मल्टीप्लाई पार्ट. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नंबर ऑफ figures stream arrange on conversion of units. अगर तुमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया, so during that our significant figures, the number must not change. So these are some of the rules which are to be followed whenever you want to count significant figures. So now the point is कि जब भी हमको significant figure count करना है तो हमें इन rules को follow करके ही count करना पड़ेगा. ठीक है. Say for example, we take a question में इस set question आया है एग्जाम में to count the number of significant figures. ठीक है. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ, राइट, इसको इज डन. आई होप यहाँ तक हो गया द रूल्स पार्ट. हेलो. Yes, sir. द क्वेश्चन दैट इज देयर, जो आया है पहले भी, द क्वेश्चन इज कि द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ द respective number of significant figures respective number of significant figures for the numbers. So number है 23.023, 0.3073 and 2.1 into 10 to the power minus 3 are
The first option is option 1 is 4 comma 4 comma 2. Option 2 is 5 comma 1 comma 2. Option 3 is 5 comma 1 comma 5. And option 4 is 5 comma 5 comma 2. Okay, question from A to B, right? 2010. What will the answer tell me? As per the rules. You can just see the rules and check. First को देखो, first में हमारे पास 2, 3 और लास्ट का 2, 3 ये चारों नॉन जीरो डिजिट्स है तो दे विल बी सिग्निफिकेंट. बीच में एक जीरो है, as it is bounded by non zeros तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा. Automatically we can say here we have 1, 2, 3, 4, 5, right? We can say कि when we are counting 23.023 we have 5 significant figures. If you put the second number 0.0003, तो ये जो तीन zeros है, they lie to the right of the decimal, but the left of the non-zero digit that is 3. तो obviously as per the rule, ये तीन zeros significant नहीं होंगे. तो 0.0003 पे we have only one significant figure. And finally, when we write 2.1 to the power minus 3, तो मैंने बताया था कि जो real part है, characteristic part, उसी में significant figure देखना है हमें. 10 to the power क्या है उसमें नहीं देखना है. तो 2.1 में दोनों non-zero digit है, दोनों significant है, so we have two significant figures. So the option 2 is correct, that is 5, 1 and 2. Is that clear? So no. Is there any confusion? Coming to कि these were the rules to only count the significant figure, but अगर हमें कोई भी suppose हमने कोई भी measurement किया किसी different quantities का, तो सब में कुछ ना कुछ significant figures are there, and when we combine them, when we add, subtract, multiply, divide them, तो automatically the numbers will be combining. तो result में कितने significant figures रखने हैं कितने नहीं रखने हैं. So for that we must know about the rules of arithmetic operations. So arithmetic operations with regards to significant figures. With regards to तो इसमें जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल इज कि फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर तुम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, और multiplication or division, if you are multiplying or dividing two numbers, so the idea is that the result must have, the result should have as many significant digits as there are in the number
least significant digits having the significant digits. तो जब भी हम किन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, whenever we are multiplying numbers, तो रिजल्ट में हमें उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है जितना मिनिमम है, at minimum number of significance in all the individual values. On the other hand, when we come to addition or subtraction, the rule is that the result must have as many decimal places as there are having the least decimal places. Remember कि don't get carried away by the language of the question. Simple याद रखना है कि जहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वहां पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर का मिनिमम वैल्यू देखना पड़ेगा, and accordingly we have to round off the result. And जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है वहां पे हमें डेसिमल प्लेस कितना है, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस आ रहे हैं उसको देखना है, and accordingly we have to round off the number. इसका मतलब क्या है कि कभी भी अगर हमें ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का रिप्रेजेंटेशन का बात, हम लोगों को कैसे नंबर को राउंड ऑफ करना है. ओके, राउंडिंग मींस finding the nearest, you can say, desired value. ठीक है, तो nearest whole number हो सकता है या whatever number of decimal places are required up to that. तो कभी भी अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जस्ट लाइक द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, तो रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ क्या क्या है उसको हमें समझना है, देन ओनली वी कैन गो टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट. ठीक है, सो ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम, please rejoin the meeting. उसके बाद हम लोग continue करेंगे. We'll continue with the same point. Please rejoin the meeting, then we will continue.